जो लास्ट टाइम क्लच लगाया अभी तक चल ही रहा है, वायर जो बदली किया है। तो तुम ना एक्सीलेटर काहे नहीं रखता है? यामाहा तो अभी लिया ही होगा ना बहुत जन। ज़्यादा लगता नहीं है ना, डबल रहता है। वही बात है ना। और इसका कोई उपाय नहीं सिंगल करने का उसको? व्हाट्सएप में जो दिन फ्री रहेगा ना, जो दिन ज़्यादा काम रहेगा नहीं तेरा, मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर देना। लाइट तो जल रहा है, स्विच खराब हो गया हुआ है सेल्फ का। So guys, Tinku is trying out some other things because the bike is not getting started after installing the new Amaron battery. The accelerator cable, 2-wire accelerator cable is used in the FZ. रिले है ना? अच्छा, एक बार तो इसका इस तरफ वाला रिले खराब हुआ था। Guys, looks like the old relay is bad, so searching for the new relay. So guys, we will be installing the new relay to replace the old Yamaha brand relay with the Hero brand relay and see if it will work or not. That's the new relay over there, and Tinku is removing the old relay from my bike. Success. So it was a problem of the relay, but we have changed the battery also. And now the bike is getting started with the self start. And Tinku is tightening the bolts of the relay. New relay has been installed in my Yamaha FZ 2.0 2014 version bike. टेप दे क्या? टेप लगाना उसमें। Now he is putting back the covers, the show covers. Let me show you the old relay. So this piece is responsible for not starting the bike. This is the old faulty relay of Yamaha 2014 bike, and this is the first time the relay near the battery has been changed. ये relay को क्या बोलते हैं?
कौन नंबर का क्या बोलते हैं? सेल्फ रिले बोलते हैं। सेल्फ रिले, अच्छा। और इधर वाला जो एक बार चेंज हुआ था, ये शोरूम वाला किया तो वो क्या था रिले? इधर इस तरफ में था एक वो तो स्टार्टिंग में अच्छा, सेल्फ रिले। इसमें